Welcome students in a new class. Today our topic is moving coil galvanometer. So this galvanometer helps us to detect the small currents and also we can measure these small currents. So this device was first devised with Kelvin and this was later on modified by D. Arsenal. So what is the principle of this? On what principle does it work? क्योंकि जो हमने कल पढ़ा that a coil when placed in a magnetic field, if the current flows through this coil, a torque is produced in the coil. Then when torque is produced in a coil, in a current carrying coil, when it is placed in a magnetic field. So this is the principle of this galvanometer. तो यहाँ भी एक coil हम रेक्टेंगुलर coil ही लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. तो when current flows through this, the torque is produced, gets produced in the coil, and this is the principle of this galvanometer. तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंस्ट्रक्शन इसकी ये है कि इस there is a coil which is made up of insulated copper wire. It has a large number of turns and it is wound over a non-conducting, we can say non-metallic frame, and it is suspended by a phosphor bronze and is placed between the pole pieces of a natural magnet. A soft iron core is also placed inside this frame, and the other end of this coil is connected to a hairbrush, and which in turn is connected to the terminal T2. Here also there is a small concave mirror in the front side of this phosphor bronze, and this whole arrangement is kept in a non-magnetic box so that the disturbance of air do not disturb the arrangement. There are also some leveling screws at the lower side of this box by which we can level the whole arrangement. What is the theory of this? इसके हम लेंथ ले लेंगे L, breadth ले लेंगे B, and let the N be the number of the turns, or B be the magnetic field, and I be the current which passes through this PQRS. तो एरिया इसका आता है L इंटू बी. अगर हम अल्फा लेते हैं एंगल जो इसका नॉर्मल बनाता है कि इसके साथ नॉर्मल coil का normal to the plane of the coil which makes with the magnetic field be alpha, then torque in a tau will be equal to NIBA sin alpha. तो अगर जो magnetic field है, if it is parallel to the plane of the coil, then the normal makes an angle of 90 degrees with the magnetic field. So sin of 90 is equal to 1, or we can say alpha sin alpha is equal to 1. Therefore torque will be equal to NIBE. Due to this, जो torque जो produce हो जाता है, the phosphor bronze के जो होता है वो ट्विस्ट हो जाता है और इसमें एक रेस्टोरिंग टार्क डेवलप हो जाता है. और ये रेस्टोरिंग टार्क काम करता है टू टेक द coil back into their original position. अगर थीटा एंगल है ऑफ द ट्विस्ट यानी जो टर्न थ्रू विच
this coil gets turned will be theta. तो जो ये theta angle है, it is the turn produced in the phosphor bronze. तो total restoring torque क्या बन गया, k theta. So where k is the restoring torque per unit twist. तो इस तरीके से क्योंकि ये रेस्टोरिंग टार्क जो डेवलप होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क से, यानी टार्क ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट. तो वो आता है जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो है NIBA और ये आएगा बराबर के थीटा. तो इस तरीके से आई आएगा बराबर के अपॉन NBA इंटू थीटा. और यू कैन पुट दिस के आई एन डिवाइड बाई NBA इक्वल टू G. So I will be equal to G theta. तो इस G को कहते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट. तो इस तरीके से I हमें प्रोपोर्शनल आया थीटा. सो दिट मीन्स मोर द करंट मोर इज थीटा. वी कैन से मोर इज द थीटा मोर इज द एंगल. मोर इज द ट्विस्ट मोर इज द एंगल. यानी जितना ज़्यादा ट्विस्ट है उतना ज़्यादा एंगल हो जाता है. इस तरीके से हम इस एंगल को जो डिफ्लेक्शन है इसी के बुनियाद पर हम करंट को मेजर कर सकते हैं. Now there is a current sensitivity. So current sensitivity होता है the twist produced in the this coil per unit current. यानी एक यूनिट करंट में कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाता है गैल्वानोमीटर में. तो अगर थीटा हम ले लेंगे ट्विस्ट और आई ले लेंगे करंट, देन करंट सेंसिटिविटी आई थीटा विल बी इक्वल टू एन थीटा अपॉन आई. तो थीटा अपॉन आई आएगा ऊपर हमने निकाला है. It is equal to NBA divided by K. तो यूनिट्स ऑफ दिस करंट सेंसिटिविटी और जो कि थीटा रेडियन में हम मेजर करते हैं और आई करते हैं एम्पियर में. 200 वी कैन से रेडियन पर एम्पियर. अब है वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी ये भी डिफाइन होता है दैट ट्विस्ट produced in the galvanometer per unit volt. तो अगर थीटा एंगल है और वी है वोल्ट तो वोल्ट सेंसिटिविटी आएगा थीटा डिवाइड बाई वी चूँकि IR के बराबर होता है इसलिए आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा बटा वी, दैट मीन थीटा बटा IR. तो थीटा बटा IR बराबर NBA डिवाइड बाई के और इसके अब मल्टीप्लाई हो जाएगा R. तो सो दैट मीन्स KR. सो यूनिट्स ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी आर रेडियन पर वोल्ट. तो इस तरीके से अगर हम ले लेंगे कंडीशन फॉर द करंट सेंसिटिविटी, तो गैल्वानोमीटर जो सेंसिटिव होता है तो इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं तो सो दैट इट इज sensitivity can get increased. यानी ये लार्ज डिफ्लेक्शन आएगा स्मॉल करंट के लिए. तो हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू आई. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द n when we increase the n so that the theta will get increased, but we cannot increase theta to beyond certain limit because it become heavy. So इसके अलावा है B in the magnetic field. So increasing the magnetic field will increase the twist. इसी तरीके से एरिया, अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो एरिया से भी थीटा इंक्रीज हो जाता है. लेकिन एरिया को भी हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट विल बिकम बल्की. So by using these certain changes we can increase this current sensitivity in the galvanometer.